है, जहां पर कृष्ण अपने परिवारजनों के साथ सांसारिक जीवन जो है निभाते हैं, अपने माता पिता देवकी वसुदेव, यहाँ तक भी उग्रसेन के वहीं पर भी राज सिंहासन में बैठाया। कृष्ण स्वयं राज सिंहासन पर बैठे नहीं। कृष्ण कृष्ण सब कुछ किया किंतु अपने सिंहासन पर नहीं बैठे। सभी लोग उसके द्वारकाधीश भी कहते हैं, द्वारकाधीश्वर कहते हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण But actually Krishna, नहीं बैठे, राज सिंहासन नहीं बैठे। he's not sitting in the throne of कंस के Dwarka. पिता को जो है वो राज्य दे दिया Actually, और Krishna gave the kingdom to the father of Kamsa, और अपने सब Ugrasen. कार्य जो है राजकार्य स्वयं परिचालना करते हैं। Krishna, yes, he takes care of the duties of king, but who sits in the throne is Ugrasen. Because Ugrasen is old already, so that's why Krishna, he does not sit on the throne. और कृष्ण द्वारकापुरी में ऐसे कहते हैं, शास्त्र में लिखा And है, Shastra explains about Dwarka में जो है चतुर्भुज रूप में ही that in Dwarka generally Krishna is with 4 arms. मथुरा में तो कभी-कभी द्विभुज रूप In में, Mathura sometimes Krishna is having 2 arms. नहीं मथुरा में कभी-कभी चतुर्भुज धारण Sorry, करते in हैं। Mathura sometimes, very less, few times, Krishna has 4 arms. But generally in Mathura, Krishna is keeping only 2 arms, showing only 2 arms. द्वारका में कृष्ण But in Dwarka, Krishna, he's with 4 arms, many, like, mostly. सभी लोग उनकी भगवत स्वरूप और भगवान मान करके, that's why everyone sees him like God in Dwarka. तो कृष्ण की कथा हम काल श्रवण करें। So yesterday we spoke how Gopkumar came to Dwarka and he saw the beautiful Dwarkapuri, कृष्ण कैसे and how Krishna अपने महिषियों के साथ is with his queens, Mahishis, वो चेस गेम्स आदि खेलने लगे, playing chess games, बिल्कुल नरवत लीला जैसे, just like a human being. हास परिहास भी करने लगे। He's laughing and joking, making jokes with them, 16,108 with महिषियां his 16,108 queens. महिषी के गर्भ में And Krishna did in the womb of each of the queens 10 sons and 1 daughter. उत्पादन किया। तो इसे लगाइए कितना विशाल उनकी परिवार है। So you can calculate how gigantic is Krishna's family. So we have our family, we have 1 son, 1 daughter, and just taking care of our 2 children, it's so difficult, isn't it? हम 2 हमारे 2, हम 2 और हमारे 2, मतलब क्या? So like we are 2, I want 2. मियां बीवी है, पति पत्नी है, so we are wife and husband, and we want 2 sons. I mean, 1 son, 1 daughter, 2 children. That's why they say we are 2, we want 2. Like we are a couple and we want 2 kids, 1 boy and a girl. So and to keep your family and to, you know, it's very difficult, isn't it? किंतु द्वारकापुरी में देखो कृष्ण, but in Dwarka, Krishna, he has 16,108 queens, and in the womb of each of his queens, Krishna had 10 sons and 1 daughter. आप बताइए कितना विशाल परिवार है। और भी So imagine how gigantic Krishna's family is, and also he has so many granddaughters, grandsons. No, it's gigantic family, and Krishna behaves just like a family with everyone, like a worldly relationship with everyone in his family, you know, like yesterday I told about his worldly behavior. Like although Krishna is God, so sometimes he's laughing, joking with some queen, sometimes he's playing chess with another queen. Then Narada Rishi, once he was traveling and Narada came to Dwarkapuri, and Narada became amazed, impressed. Oh, Krishna is at the same time with 16,108 queens, and he's doing pastimes with everyone at the same time. देखो जोगी और भगवान में यही अंतर होता है, इसलिए भगवान This is the difference between God and the yogis. That's why God is called Yogeshwara. He's the controller or the best of the yogis. One yogi can manifest more forms, but all the other forms, they will like a shadow, they will follow the same movements of the original form. For example, a yogi manifests 50 forms, suppose. For example, Sobari Rishi, he manifested 50 forms, and then he married to the 50 daughters of King Mandata. But see something, his main form
और उसके रूप के भांति जितने भी और दूसरे भी रूप है used सब to एक काम करेंगे। act just like his original form, like a जैसे shadow, जोगी like all the movements were अनेक same रूप of धारण his करते हैं, original इसलिए form. मानो एक पैर दाहिने हाथ उठाया, सीधे Suppose हाथ he उठाया, lifts one और his जितने भी right दूसरी arm, प्रतिमूर्ति जो all है his other manifestation of his है, body, like his वो expansions, भी will also उन्हीं उठाएगा। lift their जो right मेन arm. जो कुछ करता So रहेगा whatever the और original सारे प्रकाश yogi की does, all उस the काम others, करते रहेगा। they must समझ में आया? also do same, हैं? like all, they किंतु also भगवान copy में ये because like विशेषता they क्या are है? same. हैं? But भगवान with क्या प्रकाश God, करते हैं? with Krishna, उनके ऐसे नहीं Bhagavan, है, with him is not like हैं? that. उनकी जो है अनंत रूप धारण He करके can manifest अनंत unlimited forms भाव आदि प्रकाश with करते रहते हैं। unlimited different moods and doing different जैसे मैंने things at the कहा, same नारद time. ऋषि जब So like द्वारकापुरी when में Narada Rishi, प्रवेश he किया, came to Dwaraka and he देखा कृष्ण के अनंत saw रूप धारण how करके Krishna was manifesting हैं? unlimited forms. किसी मही के साथ महिषी And के he साथ was मनो with some चेस खेल रहे queen हैं, playing chess किसी के साथ with, हास and परिहास कर another रहे queen हैं, he was like joking with कहीं कुछ her, क्रीड़ा आदि करते जा रहे or हैं, he खेल was कूद कर रहे हैं, like वही कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई playing in देते another place, like the same हैं? Krishna. इसलिए जोगी और भगवान में ये अंतर है, This is the difference between yogi यह and समझना। Bhagavan. Try to understand. थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा You have to give some कि attention जोगी to भी that. अनेक रूप धारण That कर the लेते हैं, जैसे yogis मैंने also सोबरी can ऋषि को manifest many उदाहरण दिया। forms, just like I give the example of सोबरी Sobari ऋषि Rishi. मंदता के Sobari Rishi was उनकी कन्या को जो है शादी करने के लिए, Sobari Rishi wanted to marry the daughters of King और Mandata, किसी कन्या जो है उनके शादी करना नहीं चाहते, but no queen, क्योंकि मंदाता no जो है princess wanted to marry सोबरी him ऋषि जो है because Sobari अनेक Rishi, साल तक he was जमुना doing में रह करके austerities in the तपस्या Jamuna की, for many उनके शरीर years. कैसे हो So गया? his body was so लीन हुई, माने thin, बहुत you know, दुबली lean and पतली हो thin, गया like he was like है। a lean and और thin शरीर में body. अनेक प्रकार जो पानी And में अनेक also दिन रहने से because जैसे he was वो so फट much जाता time है, under क्या the फट जाता है? water, काई जम जाता his है। body was full of कौन moss, उनके शादी moss, करेगा? like, सब जो you है know, ऐसे कर। nobody wanted to marry him in that condition. अब सोबरी ऋषि ने क्या की, देखो So Sobari Rishi, अपने जोग बल से with the हैं, सुंदर रूप धारण with his कर potency of his yoga है, यही जोगी power, he है। manifested a beautiful अच्छा form. जो रूप धारण कर लिया, मंदातर के 50 कन्याएं So when he manifested a beautiful form, all the 50 daughters of King Mandata said, I want to marry him, I want to marry him. Then Sobari Rishi manifested 50 forms to marry them all. And then he married to all the 50 princes. और कृष्ण भी अनेकों रूप धारण करके जो महिषियों के साथ, इससे अंतर क्या है? But when Krishna is having many forms to associate with all the queens at the same time, what is the difference? जो उनके मूल जो स्वरूप है, So difference is, Swabari Rishi, whatever the original form, his original form does, all the other forms, they also copy that same movement. Like they all do the same movement at the same time, according to what the original form does. But Krishna, no, he can manifest 16,108 different forms and play pastimes with the queens, but different things happening with different, like his different expansions can do different things at the same time. So this is the difference. So Bhagavan Krishna, he was laughing, joking with the queens. Yesterday I gave the example of Satyabhama. नारद ऋषि स्वर्ग से एक पारिजात पुष्प लेकर के पधारे और उनके कहने लगे, भगवान So Narada brought one parijata flower and told, सबसे प्यारी जो रानी है उनकी हाथ में दिए, मेरे सामने please give in front of me now this flower to your best queen. Then Bhagavan gave to Rukmini. सत्यभामा के मान हुई और अंत में भगवान सत्यभामा के मान मनाने के लिए And Satyabhama became so angry. And then to pacify the mind of Satyabhama, Krishna had to go to Swarga and defeat the Indra, then Krishna brought, he just uprooted the complete tree of Parijat and then he planted that tree in the courtyard of Satyabhama. Then Satyabhama called all her friends and all of the queens, and she made a beautiful party, a great party, because of that new Parijata tree in her courtyard. So there are many leelas in Dwarka. Just like in the material world, people live and have kids and daughters, and they have family like this. So once what happened, look, Bhagavan Krishna Chandra, he was lunchtime in Dwarka after taking prasad. और उस समय कृष्ण रुक्मिणी के जो है प्रसाद में मैंने Krishna was in the house of Rukmini. रुक्मिणी कृष्ण के बहुत सुंदर रूप में मखमल
बिस्तारा बनाया And Rukmini और भगवान के बैठने के लिए आसन भी दिया gave asana, a beautiful like a bed for Krishna. बनाई And Rukmini, she did one tambula for इतने Krishna, सुंदर कृष्ण betel भी पान nuts. चिबाने लगे Krishna was chewing betel और nuts, रुक्मिणी भी and क्या करने लगे Rukmini, she was पंखा लेकर के उनके taking a झलने लगे। beautiful धीरे, fan, धीरे, and धीरे, slowly, धीरे slowly, हवा slowly, करने she was fanning लगे। Krishna. भगवान कृष्ण वहीं पर उनकी पालन पर Bhagavan बैठे Krishna, कृष्ण विचार करने लगे he was मैं thinking, थोड़ा हास परिहास कर लेता हूँ I will make some joke with her. कृष्ण के मन में ब्रज की उद्दीपना हुई हैं? देखो ब्रज में कृष्ण जब राधा आदि गोपियों के साथ कुंज में जब विहार करते थे When Krishna is doing कभी कभी गोपियां क्या करते कृष्ण के जो है pastimes पंखा भी करते थे हैं? with the gopis, sometimes the परिश्रम है ना? gopis fan Krishna also. वो है ना ये कब वो मेरा दशा होगा जब जुगल किशोर किशोरी जब When this state will come to me, this condition, when the Jugal Kishore, Kishori, they are taking rest, the Kunja, and we will be able to fan them very slowly, slowly, जिससे उसके सेद बूंद so that their sweats, their sweat drops can disappear, like all their sweat and all their like their tiredness will be removed by our fanning. So this one kirtan explains this. So Rukmini was fanning Krishna, right? After he took prasadam and he was chewing the betel nuts, and Krishna was remembering Vraja pastimes of Vraja. Just like Rupa Goswami explains in the Sampattanastakam. इसके वर्णन करते जा रहे हैं कृष्ण उसी प्रकार जो है चिंतन करते जा रहे हैं Krishna was thinking like that. परिहास कर लेता हूँ इसलिए कृष्ण अकस्मात थोड़ा गंभीर हो गए Krishna thought, I'll make some joke. Then suddenly Krishna became very serious and told, hey Rukmini, look, तुम जैसे सुंदरी हो न भूतो न भविष्यति you are so beautiful. Nobody is so more beautiful than you in the past or in the future. Everybody becomes completely attracted and enchanted by your beauty. There's no one who does not become intoxicated by your beauty. Seeing your beauty, even Shishupal, he wanted to marry you, and your brother, had already fixed your marriage with Shishupal. And you are going to marry Shishupal. So, but Narada came that night and he started saying the glories of Krishna, listening to the glories of Krishna. Rukmini, she developed so much eagerness to meet with Krishna and to have his darshan. So in this moment, Rukmini wrote a letter to Krishna. Hey Krishna, hey Govinda. The food of the lion now is going to the charcoal. Means this foolish and ignorance and evil Shishupal, he's not qualified to be my husband. Hey Govinda, please accept me. I just want to serve you birth after birth. So she did such a pathetic letter she wrote, and through a brahmana she sent to Krishna. When Krishna read this letter, Krishna is Sharanagata Palaka. He protects those who surrender to him. So immediately Krishna went to kidnap Rukmini. Bhagavatam explains, also the Puranas also explain this story. So Krishna was telling to Rukmini, Rukmini, you are so beautiful. You are so young. Who in this world wouldn't be fascinated or enchanted by your beauty? Actually, I'm not qualified to be your husband because you're so pretty. You were fair, like your white complexion, but I am black, completely black. And also, I don't have any money. I'm poor. I don't have any money. But you are directly the
murti of Lakshmi Devi. You have so much wealth. Actually, I'm not qualified to be your husband. But you wrote that letter to me. When I read that letter, I felt it was my desire. Sorry, my duty to protect those who rendered to me. That's why I came, kidnapped you, and then I got married with you like this. But actually, I wasn't qualified. I'm not qualified to be your husband. So Krishna, in such a humble way and feeling very wretched, like he told, "Hey Rukmini, if you want, again, if you want to then marry Shishupal, I give you my word that I will arrange your marriage with Shishupal. And if you say that Shishupal will not accept you because how can Shishupal marry someone who's already married before, has some marriage before?" So then Krishna told, "Hey Rukmini, look, until today, until present, nowadays, Shishupal is waiting to humiliate me, and just to and waiting on when Rukmini will come to me, because Shishupal wants me to be put in a bad position. Like, so if you just say I want to marry Shishupal, immediately I will send you to Shishupal, and I will arrange everything for your marriage with him, for your wedding with him." Then Krishna told like this. And he was saying, then the body of Rukmini, just like a leaf, was like trembling, shaking, and she was sweating so much. She started sweating, and then immediately what happened? The fan she was holding fell on the ground, and Rukmini said, "Ha Krishna, Ha Govinda," saying like that. She, just like a cut banana tree, she just fell, pa, like this, on the floor, fainted. Krishna thought, "Hey, what happened?" Then immediately Krishna, he lifted Rukmini and he put her sitting on his lap, and he was like putting some water on her head, some fresh water like this. And after a long time, she woke up, like she came to her senses again, and she was really fainted, And then when she came to her senses, when she came around, she told, "Govinda, I got her lotus feet. I've attained her lotus feet after so many births. If you kick me out from your lotus feet, where will I go? Hey Govinda, you are Sharanagata Palaka. You are the protector of the surrendered. Everyone knows. If any person once just comes to the feet of Govinda, only thinking about him in his mind, in your mind. For example, the evil Kaliya. So, the evil Kaliya used to swear Krishna, saying that Krishna was not God. But the devotees of the wives of Kaliya were devotees of God. But Kaliya was very evil. What speak of accepting Krishna was God? Kaliya was such an envy mood towards Krishna. Kaliya had envious mood towards Krishna. But when Krishna started dancing on the heads of Kaliya, and when blood started coming out from Kaliya's mouth, then Kaliya remembered something. Oh yes, my wives, they used to speak to me, tell me about Krishna's glories like this. Is this Krishna then? Such a powerful person then. So Kaliya started remembering that, and in his mind, Kaliya surrendered to Krishna in his mind, in his own mind. So Krishna is Saranagata Palaka. Even if an evil person once surrenders to the feet of Govinda, Bhagavan will forgive all the offenses of this person and will give place in his feet and make this person his servant. Rukmini was remembering this and saying, "Hey Govinda, you are Saranagata Palak. You protect the surrendered. Even Gita Bhagavan says, even if a
person who does very bad दुराचार से अति activities, दुराचार, अति durachar, दुराचार, ati durachar, भजते मां like somebody अनन्य who's भाको, such a एक low. बार अनन्य हो जाए, So if the भगवान person ऐसे दुराचार might do व्यक्ति की bad, भी very bad छोड़ते नहीं। activities, but if the उसके person क्या is one करते? pointed devotee, उसके God does सारे not मैल give के this जो है person up, अपराध, does not give him और up. Krishna पाप God ताप आदि के will समस्त clean all जो है, the person's anarthas दूर and करा sinful करके फिर activities, and then अपने गोद में ले लेते हैं। Krishna will take this जिस person on प्रकार his माता lap, पुत्र का just नाक like जो a mother है, साफ सुधार करके cleans यदि कभी her पुत्र babies. कन्या You know, for माता के example, गोद में यदि maybe फैटी the पेशाब कर baby दे, will तो माता अब क्या passing करती है? stooling on the lap of the अपने mother, पुत्र कन्या in the को lap of फैटी the mother. पेशाब के साफ So the करा mother will करके just clean पुनः the, the अपने गोद में ले लेती है। dirt from the हैं? passing stooling फिर and उसी प्रकार again take them on her lap. उसी प्रकार स्वयं भगवान So in the same way, एक स्वयं साधु भगवान, शरणागत के, एक छोटे से छोटे भक्त यदि हो, even if a हैं? small devotee, like तो a, भगवान उसी प्रकार comes कहने to लगे, him. जब So- सब एक क्या बोले रुक्मिणी ऐसे रोने लगे, हे So गोविंद, Rukmini started crying, मुझे saying, आप "Hey अपने Govinda, चरण कमल से मुझे please त्याग न दे, never give me हैं? up, never give सेवा up on कीजिए me, मुझे। never take me इस out कथा को सुन करके from your कृष्ण feet, never take कहने me लगे, away." हे रुक्मिणी, So then Krishna told, "Hey अरे तुम्हारी ये Rukmini, कैसे? what is this? अरे मैंने तुम्हारे साथ तो केवल I हास was परिहास just कर रहा joking था। with you. It was a अरे joke. ऐसे हास परिहास This kind of मैं jokes, कितने बार so many times वृंदावन में गोपियों when के I was साथ in कुंज में Vrindavan. करता रहता था। I used to do this kind of यदि मैं jokes कभी with the कहते gopis थे, in Vrindavan. Sometimes I used to tell them, यदि मैं कहते थे गोपियों, if I used तुम to, लोग सदा सर्वदा मुझे if I would मुझे say, हास परिहास करते हो। Gopis, you're always joking with चोर me है, and calling me लंपट है, names, swearing me, हैं? saying that I'm a debauchee, ऐसे शब्द thief. बोलते हो। So, Gopis, you're always इसलिए saying मैं these काल things से about me. तुम्हारे So, you know, कुंज में नहीं from tomorrow on, I will not जब come ऐसे back to मैं your कहता था, kunja. When I used to गोपियां say क्या कहती this, थी? Gopis, what they अरे used to काल answer? किसने देखा? Who's आज saying कृष्ण tomorrow? आज ही Krishna, मुझे from अभी today, कुंज से from now, निकल जा। leave, get away, get out अरे of our तुम kunja. साधारण रूप में तो Get मैं out. यही मैं देखना चाहता था, So, किंतु तुम्हारे क्या हो गया? I wanted to see this kind of jokes also between us, but इस what प्रकार happened? कृष्ण Look. रुक्मिणी के जो है सांत्वना दे, रुक्मिणी So कहेंगे Krishna प्रभु pacified Rukmini. हमें कोई चरण Rukmini जिससे told, आप, "Hey दूर मत Prabhu, रखिए। please don't keep भगवान me फिर far from पुनः your कहने feet." लगे, रुक्मिणी, Then Krishna सुनो, told Rukmini, तुम "Listen, हमारे विवाहित you are my married wife, like wedded साक्षी रख wife. करके, We, with तुम्हारे साथ मेरा the विवाह witness of the fire, we got married. अग्नि साक्षी रख करके विवाह हुआ। The wife, oh तो sorry, the तुमको fire मैं was कैसे a छोड़ दूं? witness. How can I give up on हैं? you now? ये कभी संभव नहीं This है। is impossible. तुम मेरा विवाहिता You are my wedded wife. है, ये कभी संभव नहीं। Impossible I देखो, give you कहने up. लगे, It's impossible अरे for me ये to केवल give you हास up. परिहास है। I was just देखो, joking. It was a संसार में joke. You know, because in the लोग हास family, परिहास करते हैं। किसके in the साथ? family अपने people, पत्नी के साथ। in the family हैं? people joke सारा with दिन their काम wives. करते करते, You know, बाहर because काम people करते work whole करते, day and then when they जब come घर back में to their आते हैं, house after working हैं? whole day, तब कुछ मन के जो है then बदलने के लिए just to change the mood of the mind, like some diverting, like some हो entertainment. सकता है पत्नी के साथ हास परिहास भी करते You know, you can joke with your wife, make some jokes. यही तो है वास्तव रूप में है। देखो और So, दूसरी बात है, another thing also is that पति पत्नी में ये झगड़ा नहीं है, ये तो एक प्रेम की कलह का है। actually the husband and wife, they don't quarrel. It's actually loving quarrel. जिस प्रकार भगवान कृष्ण So एक Bhagavan उदाहरण Krishna दिया, gave an example. देखो जब हम बर्तन साफ करते हैं, When we're cleaning pots, भोजन के बाद washing pots, जब हम बर्तन साफ washing the करते हैं, dishes, 8-10 after, बर्तन जो हम for साफ example, करते 8 or हैं, 10 pots we एक are washing बर्तन after साफ the करके दूसरे बर्तन prasadam, जब after रखते हैं, food. देखो So एक बर्तन when दूसरे we're बर्तन washing में the लग pots, करके like क्या होता है? the dishes, ठन ठन शब्द होता है कि you नहीं know, the होता है? pots, they make this sound, शब्द dun, होता है। dun, like resounding फिर कुछ sound समय when they के बाद वो बंद हो touch जाता each है। other. But after some time, उसी प्रकार हमारे this सांसारिक noise जीवन में stops. हास परिहास किसे So करे बताओ? in our family life, who will मानो we कोई संसार ऑफिस में left गए, joking ऑफिस में with किसके whom? साथ हास For परिहास example, करे? you travel, काम करते you work करते in the बेचारा office, थक जाते you'll हैं। become tired of working. Who can you और play घर or में sorry, आकर joke के, inside your office? So you come to your house, you want to make some तो ये jokes, some हास fun. परिहास है। So you, with your wife, you'll do that. पति So this पत्नी is में just जो परिहास, has शास्त्र में इसी parihas, प्रकार कहा जाता है। means laughing, joking. संसार जो Shastra है इसी explains प्रकार ही है। the family must have जैसे this. दोनों बर्तन में ऐसे एक साथ में लगने And से I mean, जैसे this कुछ is समय normal. के लिए Shastra explains. ठन ठन Just like शब्द when you're होकर washing के, the dishes, फिर 2-4 सेकंड के बाद अपने the आप dishes, बंद the pots, they touch each other and they make देखो, this sound, देखो, dun, संसार dun. But कब after कब होता है? this पत्नी sound यदि stops. गुणशाली हो, So when the family is happy, if पत्नी के the, ऊपर संसार की सब कुछ actually the निर्भर family करता depends on the wife. है। सुख शांति जो है The peace and happiness in the गृह family में, depends और गृह में पत्नी के ऊपर निर्भर करता in है। the wife if she has good जैसे qualities. कथा को मैं समाप्त करता हूँ। So एक कहते हैं, देखो I'll tell you one एक story. व्यक्ति जो है एक संत महात्मा के पास गए।
One बोले, man महाराज came to आप a saint बताओ, and told, मेरे पत्नी आज मेरा 20-25 साल तो विवाह हो Maharaj, गया, I'm married for मेरे पत्नी 20, मेरे 30 ऊपर years कभी already, प्रसन्न but नहीं my हुई wife, she's never है। been pleased with me, never, दिन ever. रात काम करते करते घर लौट करके जाता हूँ, I work whole day. When I come back to पत्नी my कभी house, कुछ ऐसे my बोल के wife, जाते हैं, मेरा मन जो है बहुत उछड़ गया, she क्या tells करूँ me आप बताइए, something and I'm so हैं? disturbed. देखो ये So what can I संसार do? क्या करें, She disturbs me and we like संत this महात्मा problem. सब कथा So, सारी कथा सुने, घर संसार so की कथा this सुनाए, man told all his संत problems in the महात्मा family सारे घर to the संसार की sadhu. कथा सुन करके, And after पति पत्नी के सारी कथा सुन करके after कहने listening लगे, about their देखो problems, the sadhu told, पत्नी प्रसन्न हो जाए तो if you want to संसार please your के wife, साथ सुख होगा। तो पत्नी if के your प्रसन्न wife will be करने के लिए, pleased, पत्नी your को family will प्रसन्न be करने के लिए okay. क्या उपाय So what do बताइए? you need to please your wife? तो संत महात्मा कहने लगे, एक उपाय बताता हूँ, And सुनो, this sadhu told, I have one way. पत्नी Tell, प्रसन्न के listen. लिए मैं एक उपाय I'll बताता tell you हूँ। one way to please your क्या? wife. The only way. ये देखो, I पत्नी mean, तुम्हें one रसोई way. बनाती है ना, When your wife हाँ, cooks, she cooks, right? Yes. देखो पत्नी जो कुछ भी बना, Whatever she has तुम cooked, खा लो eat it. और खा करके Eat, पत्नी को क्या and करो, then after उसके that, ऊपर you should प्रशंसा करो, like praise भले ही her. नमक ज्यादा हो जाए, कम Maybe हो जाए, there's हाँ? less salt or too much आगे salt, जी। but तो you फिर कहो, should आहा, आज say, कैसे प्रसाद oh, बनाया, such आज delicious कैसे तुमने बनाया, prasadam, जैसे so स्वर्ग से nice. अमृत के भी It looks like you're cooking हैं, better than the बराबर। nectar of आहा, Swarga. तुम्हारे प्रसाद तो जो Oh, है, your prasadam प्रसाद जो is है, directly देवता लोग मैंने ग्रहण किया, accepted by the demigods. आहा, Oh तुमने my जो God. प्रसाद बनाया, This prasada बहुत that you सुंदर। cooked is so देखो good. तुम ऐसे कहो, देखो So if you say like पत्नी this, प्रसन्न हो जाए। your wife will be पत्नी pleased के with you. प्रसन्न करने के लिए So to एक ही उपाय please है, your wife, there's only one हैं? way, क्यों बेचारा सारा दिन काम करते करते इतने आग के साथ because she's like हैं, युद्ध किया है, whole day fighting with the fire, है कि you नहीं, know, to आप बताओ, cook, और इतने कष्ट करके रोटी बेला, making सब्जी roti, बनाई, chapati, making हैं? sabji. गर्मी के समय कितना कष्ट होता है, Even in like हैं? summertime with अच्छा the बताओ, fire is so आप खाने के difficult. लिए बैठे, कहते Then you ये sit नमक कम हो to गया, eat ये and then you नमक say, oh, ज्यादा this हो is गया, less ये salt, गया, ये गया, too much salt, this तो is बेचारा burned. के मन क्या हो जाए, बोले मैंने इतने कष्ट She'll किया था, think, बेकार हो oh, गया, I was उसके giving so मन much उछल endeavors जाते whole कि नहीं day जाते? and it हैं? was useless. बोले नहीं, जब तुम खाने के लिए So no, बैठोगे ना, when you बैठोगे sit ना, down to eat, प्रसाद for खाने के eating, बाद, when you sit down for मैंने eating, खाने के बाद पत्नी को जो है you should, प्रशंसा कर देना। after eating, you देखो, should, you know, praise your wife's अच्छा, वो बेचारा के food. घर में आई उस दिन साथ ही साथ उनके पति ने So- खाने के दिया, क्या दिया, So yeah, बेटा, that day क्या होता है? the man came back to his house पराठा होता है ना, and his wife gave some आजकल जो paratha. है ठंडी में जो क्या बोलते हैं, मूली, So now in हैं? the winter मूली का time, बनता है ना कि नहीं, they make with हैं? the अथवा muli क्या बनता है, अथवा कड़वा लगता है जो and that one which is also a little मेथी, bit. हाँ मेथी के जो है, अच्छा चकाचक बना दिया, Anyway, हैं? she made सब्जी भी something, बनाया, some sabji, हैं? and और चकाचक जो है घी लगा दी, and she हैं? put also ghee, खाने के लिए दे दिया, and she gave to him. है, बेचारा वो खाने लगे, खाने के बाद कहने लगे, पत्नी को कहने लगे, आज तुमने कितने सुंदर है Like radish. पराठा बनाया। Oh, anyway, भूतो न भविष्य। then after he ate, the husband said, "Oh, you did such a हैं? nice food. I've देखो, never मैं seen आज such a nice इतने food." दिन से तुम्हें Then the wife said, "Yes, बनाता हूँ, खिलाती for हूँ, so आप much कोई time प्रशंसा नहीं की। I'm आज मैं feeding अपने you, and पड़ोसी से- you never praised my food. But today, this food, this paratha with this आज मैं radish पड़ोसी and से everything, है, I brought ये from बना the दी। और आपको neighbor's दे दिया, house, आप प्रशंसा and I gave to you, and now you are glorifying, praising this food. But this food is from the neighbor, not mine." अच्छा बताओ, तो पत्नी पकड़ लिया, जो तुम So किसी के the द्वारा wife सिखा हुआ, Caught him like, "Oh." मुझे ऐसे कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। तो किंतु वास्तव क्या है, So- देखो कोई भी रसोई बनाए, So if हैं? somebody cooks, उसके प्रशंसा करो, you should praise that भले ही वो person. कुछ भी बने, है? यदि उसके सुधारना है तो सबके सामने नहीं, But if you need to correct, भाई तुम्हारे ना ये सब्जी don't में speak थोड़ा in front of नमक कम है। everyone. सबके समय जो सबके Don't सामने speak in कहा front of दिया, everyone. उसके भी क्या होता है, दुख Otherwise, होता है। the person will be so है? upset. किंतु So उसको you can कैसे call. बोलना चाहिए? So how to speak that? धीरे से You can very एकांत like में, low, जब like a देखो, low ये जो voice प्रसाद in बना the ना, corner. Oh, है, you made that उसमें prasadam. नमक ज्यादा हो गया Ah, it था, was too much है, salt, or थोड़ा ठीक कर लेना। or please make it किंतु better सबके next सामने time. बोल दिया, But don't तो speak in front क्या of हो जाता है? everyone. This, otherwise the person है, अपमान हो जाता है। it will be like वास्तव में insulted. सत्य है। This is true. बेचारा इतने कष्ट करके इतने समय तक Because the बनाया, person was cooking for है, such a long time और and कहा so much जाए, ये efforts. अच्छा नहीं है, And ये if you नहीं say, है, "Oh, ये this is नहीं not है," good, this is not वो ठीक this, नहीं होता। it's not proper." है, तो हम इसलिए कह रहे हैं, So- देखो Yes. द्वारकापुरी में कृष्ण In जो है Dwaraka, इसी Krishna. प्रकार रुक्मिणी के साथ अथवा अन्य और दूसरी With पत्नियों के Rukmini and साथ also अनेक प्रकार इस other प्रकार हास्य queens, प्रयास अधिक Krishna is करते doing so many funny, हैं। like pastimes, इसके funny, पश्चात laughing, जो joking. रुक्मिणी की कथा सुनाई, रुक्मिणी जब भगवान Then- कहने लगी
Bhagavan told, हे रुक्मिणी, "Hey, ये तो Rukmini, केवल मेरा हास परिहास I was था, only वास्तव joking में with ऐसे नहीं है, you. तुमको कैसे मैं त्याग दे दूं?" How can I give you और up? Come on." फिर Then रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों मिले, रुक्मिणी Rukmini और कृष्ण मिले, and Krishna, they met. इसमें ऐसे जो हास परिहास So भगवान these kinds of गोविंद jokes द्वारकापुरी में Bhagavan भी करते Krishna, हैं, he's doing लौकिक in सद्बंधु Dwarka. भक्ति जहाँ पर Lokik करते Sadabandhu Bhat हैं। Priti, just like बोलो worldly वृंदावन family बिहारी behavior. लाल की जय, जय जय श्री राधे। At the beginning of the video, I think only 1 or 2 minutes. We've lost before. गौरांगी राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमरों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभुजन श्रीपाद माधव महाराज, नरसिंह महाराज, ऋषिकेश महाराज और क्या परमहंस महाराज, समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग बृहद भागवतामृत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। Have been listening about Bhagavatamrita Katha, जिसमें गोप कुमार अपने so Gop Kumar is telling his realization. माथुर ब्राह्मण के जो है बता So the Brahman of Mathura, माथुर ब्राह्मण कौन है? Mathura Brahman, शिष्य is his own disciple. माथुर ब्राह्मण के जो है श्रवण करा रहे हैं। He's telling to the उनके नाम है Mathura Brahman. The name of Mathura Brahman is Janasarma. And the name of spiritual name of Gop Kumara is, क्या बताया? what have I said? स्वरूप, Swarup. याद स्वरूप, Remember. याद रखना। You should remember गोप it. कुमार की So अपने सिद्ध देह के नाम क्या है? what is the name of the Siddha Deha of Gop Kumar? Swarup. और माथुर ब्राह्मण And के the name of शर्मा नाम दिया गया। Janasarma is the spiritual name of the Mathura Brahman. Brahman of Mathura. You forget, but you shouldn't forget these things. Should not forget. माथुर ब्राह्मण So जन शर्मा, Hey, मेरी अनुभूति की सुनो। listen about my हम realization. लोग श्रवण करा रहे हैं। कहाँ गोप कुमार पहुंच गए? So Gop Kumara reached to, you remember? कहाँ पहुंच गए थे? Where has he reached to? द्वारका में पहुंच Dwarika. Yes. गए। गोप कुमार कहने लगे, माथुर Gop ब्राह्मण Kumara said, जन शर्मा, Hey Mathura Brahman, जब मैं द्वारका में Janasarma, पहुंचे, when I reached Dwaraka, देखा द्वारकाधीश भगवान की, उनकी कैसे I saw Dwarkadish Bhagavan, परिवार लोग जो है, how his family वैकुंठाद जनितो वरा was there with him. जत्र खेलति प्रभु सोदर आत्मजावृता। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी explains, बड़ा दारवत्ता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? what is higher than Vaikuntha is Dwarka. जहाँ पर कृष्ण There Krishna अपने परिवार जनों के साथ is with his family, सांसारिक जीवन जो है having just like a family life. अपने माता पिता, He has his mother there, देवकी वसुदेव, Devaki Vasudev, father यहाँ also. तक भी Even Krishna उग्रसेन के वहीं also. पर भी राज सिंहासन में बैठा है। So Ugrasen is on the throne. राज सिंहासन Actually, पर Krishna did not sit on the throne of king.
कृष्ण कृष्ण सब कुछ किया, Krishna किंतु अपने did everything, like he took care of सिंहासन पर everything, but नहीं he गए। never sat on the throne. सभी लोग उसके द्वारकाधीश भी कहते Everybody हैं, calls him द्वारकाधीश Dwarkadish, कहते हैं, like the controller of Dwarka. किंतु वास्तव में कृष्ण But actually, Krishna नहीं बैठे, राज सिंहासन doesn't नहीं sit on the throne. बैठे। कंस के पिता को जो है But वो Krishna राज्य दे दिया gave और the kingdom उनकी to the सारे father of सिंहासन में Kamsa, बैठाया Ugrasen. और अपने सब कार्य जो है राज कार्य स्वयं परिचालना करते हैं। नहीं, क्योंकि But Krishna takes care उग्रसेन also of वृद्ध the भी हो royal गए things, royal duties, because Ugrasen is very और old. इसलिए कृष्ण So राज सिंहासन नहीं बैठे। Krishna did not sit on the throne in Dwarka. और कृष्ण द्वारकापुरी में ऐसे कहते हैं, शास्त्र में लिखा है कृष्ण अधिक समय द्वारकापुरी में जो And है also Shastra explains that चतुर्भुज रूप में Krishna ही in विराजमान Dwarka है। generally he's having four मथुरा arms. में तो कभी कभी द्विभुज रूप में है, नहीं मथुरा में In कभी कभी Mathura, Krishna चतुर्भुज धारण करते हैं, sometimes बहुत कम। manifests four arms, but it's very मथुरा less. में कृष्ण अधिक रूप में Generally in द्विभुज Mathura, रूप में Krishna is only प्रकाश है, दो using भुजा two वाले। arms only, और द्वारका में कृष्ण showing two arms. But in चतुर्भुज Mathura, रूप में sorry, in विराजमान Dwarka, है। Krishna is always with four arms, almost always. इसलिए सभी लोग उनकी भगवत स्वरूप और So everybody भगवान मान करके स्तुति आदि करते रहते sees हैं। him like God in Dwarka, and they pray to him like God. तो कृष्ण की कथा हम काल श्रवण करें। गोप कुमार जब वहां पहुंचे, ये द्वारकापुरी के कैसे सुंदर द्वारकापुरी देखा और कृष्ण कैसे अपने महिषियों के साथ Yeah, so from here on, we were already translating the beginning.